So, namaskar all of you. So, Odisha Judicial Service रो जो हमारा mentorship batch रोची आज रो तारा subject of discussion रहला भारतीय साक्ष्य अधिनियम section 21 to 30. तो मुझे स्टिके कही दिए कौन है mentorship batch टा यही mentorship batch रे basically जो माने self study करचंदी किंबा जो माने already पढ़ी सारचंदी थ्योरी पार्ट टा थरो अछंदी सेतरे किंतु से सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करबा पे चाहउचंदी प्रीलिम्स पे भी और मेंस पे भी तो बेसिकली सेमानक पई एटा हमर स्ट्रक्चर टा रहउची हमर जो इंटीग्रेटेड बैच रहउची सेथरे एटा इंक्लूडेड थाए और जो माने सेल्फ स्टडी करचंदी आ एटा प्रैक्टिस पे नवा पे चाहउचंदी से माने भी एथरे जॉइन करि पारि आरो गोटे मेन जिनस है जो मैंने सेल्फ स्टडी करूचंदी तार डिटेल्ड ईयर वाइज शेड्यूल टा दिया कि आपन को बहुत पिला पचारते बेसिक केते समय लगे 3 मास रे सार दो कोर्स 6 मास रे सार दो कोर्स तो एटा गोटे 12 to 15 months रो कोर्स प्लानिंग दिया जेमती कि आपन प्रॉपर्ली सब पार्ट्स करिका सारी पारिबे प्रीलिम्स पय और मेंस पय पिला बुझी परंतु मु प्रथम कोन पढिबी तापर कोन पढिबी डे वाइज कौन पढ़ी वीक वाइज कौन पढ़ी मंथ वाइज कौन पढ़ी ये जो मेंटरशिप प्लान रे पूरा डिटेल्स दिया को बही रेफर करिवार अछि फॉर एग्जांपल तो सब जिनसे एथरे इंक्लूडेड अछि तो मु जस्ट एबे हमरा स्ट्रक्चर का फर्स्ट हमें डिस्कस करिबा सो एटा आपनकर सब एग्जाम्स को कवर करूची ओके जुडिशियल सर्विस को यूजीसी नेट क्लैट पीजी बैंक लॉ ऑफिसर्स और अदर लॉ एग्जाम्स में तो इतने हमें डिवाइड कर देचो जमती कि एटी कोर फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स अछि जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो स्टूडेंट्स माने अपन सेमेस्टर रे एडे जॉइन करिसंती ओके तो से माने भी फर्स्ट टू जॉइन करिकी सेमेस्टर रे भी अपन आको फॉलो करि परिबे तापर आसीला क्रिमिनल लॉ क्लस्टर्स जोडा कि हमरो ओजेएस और एपीपी पे बेसी फोकस तार रहउची सेथरे क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ ओके आईपीसी बीएनएस तापर एविडेंस लॉ आसीला तापर स्पेसिफिक क्रिमिनल स्टैट्यूट जोडा जन जो एपीपी रो सिलेबस रे अछि आर्म्स एक्ट अछि डाउरी प्रोविजन एक्ट अछि प्रोविजन एक्ट अछि एगुडा सब से पार्ट रे लिखले तापर क्लैट पीजी भई गला कि आपनकर बैंक लॉ ऑफिसर रे गला ओके कमर्शियल लॉ होगा तो सेटा डिवाइड करा जी पूरा सेटा आपन देखिबार अछि ईयर वाइज प्लान जोटा दिया छी ता सहित मंथ वाइज प्लान और वीक वाइज प्लान दिया छी ओके सो सपोज फर्स्ट मंथ रे कोन आपन को पढिबार अछि जेतु फाउंडेशन आपन क्लियर करिवे तो जूरिस्प्रूडेंस और लीगल मेथड्स सेथरे कोन कोन पढिया भी अछि सेटा भी दिया छी एआई आपन को पढिबार अछि को बुक रु पढिबार अछि कोन सेकंड मंथ रे तापर कोन पढियो एटा मंथली को आला तो आपनकर 12 मंथ्स रो प्लान ता दिया छी से हिसाब ओके तो ए गोटे ऑर्डरिंग रे पढले कोन ना आपण जो भी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन कि मल्टीपल एग्जाम्स पे प्रिपेयर करछन ताले भी आपण आराम रे ओके कंप्लीट करि परिबे राइट तापर आसे जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा है वीक वाइज ओके तो मंथ 1 रे जूरिस्प्रूडेंस लीगल मेथड्स थिला तो फर्स्ट वीक रे मते कोन पढियार अछि तो फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रे मते कोन पढियार अछि केतरा एमसीक्यू करबी कोन करबी तो आको कॉम्प्लीमेंट करी जे हम डिस्कस करू छु ओके तापर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आसीला सेकंड मंथ रे तो सेमती आपनकर टोटल 6th मंथ रे penal laws और special acts रहला तेणु गोटे तो है कि मु
सेल्फ स्टडी करूची मु जानची केमती मते पढ़िबार अछि मु कोटा कोन पढ़िबी प्रथमे जदि आपण निजर स्ट्रेटेजी अछि बहुत बढ़िया सेटा ही फॉलो करंतु किंतु बहुत पिला को एई प्रॉब्लम ता थाए कि कोनटा पढ़िबार अछि तापर आसी गला आपनकर रिवीजन गरिका 1 मंथ पूरा रिवीजन सेतरे रहइबो मॉक्स करिका देबे ओके आउ जोडा हमें आज देखिबा आपनकर क्वेश्चंस करिका भी रहइबो तो लिंक भी अच्छी जो माने ऑलरेडी जॉइन कर सारछंती हमर इंटीग्रेटेड बैच कोर्स एटा आपनकर ऑलरेडी कोर्स रे अच्छी आ जो माने एटा केवल जॉइन करे भी चाहछंती लिंक टा देखिबे दि तीनटा लिंक अछि से लिंक रे दिया आइछ हमर जोटा आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप बैच ओके तो आजिरो कंटेंट को आसीबा सो 21 to 31 भारतीय साक्षर अधिनियम आमे जोटा डिस्कस करिबा मत पैटर्न टा कहि दउची पैटर्न टा हला प्रीलिम्स रो 25 टा क्वेश्चन ओके आगुरु कोइ जीवा पडको कोनटा तर सिलेबस अछि जेंति कि आज हमें 21 to 30 करछु बीएस रो काली हमें बीएमएस रो 21 to 30 करिवु ठीक अछि ऑलरेडी 1 to 20 दीटा रो कंप्लीट हे सरिछि तो से जिंसटा आपण देख परिबे ओके आरो मॉडल आंसर्स अपन को दिया ही जाइथिबो ऑलरेडी स्पेशली आपनकर जो मेंस आंसर तो सेटा आपण फॉलो करि परिबे जदि आपण पूरा नुआ अछंदी ताले गोटे जिंस आपण कर परिबे कि प्रथमे मॉडल आंसर ता देखि देबे ओके तापरे अटेम्प्ट करिवे ताले आपण कांसेप्ट भी क्लियर होबो हमें बहुत गुडे सेक्शंस नहीं जेनु एक संगे 10 टी सेक्शन नहीं होची इंदी आज हमें 21 to 30 ही देखिबा ओके 25 टा प्रीलिम्स रो क्वेश्चन रहबो और 2 टा मेंस रो क्वेश्चन रहबो केमती कोन मते अटेम्प्ट करिवार अछि ओके टिके हमें मेंस रो क्वेश्चन स्पेशली सेटा आपण लाइव लिखिबे एटा 15 मार्क क्वेश्चन हिसाब रे हमें भाबी कि ताको लिखिबा डिपेंडिंग ऑन केते बड़ क्वेश्चन अछि हमें टाइमर रा फर्स्ट ये डिस्कस कर देबा सेते कोन करिवार अछि तापर हमें टाइमर को देखि कि हमर लिखिबार अछि ओके सो लेट अस स्टार्ट देन आपनकर जो मॉडल आंसर्स अछि सेतरे डिटेल्ड तार सॉल्यूशंस दिया आइछि एठी मु बेसिक खाली हमें डिस्कशन करिबा कि कोन कोन आंसर तार हबो और काहे कि और मेंस रो हमें डिस्कशन करिबा कि को पैटर्न रे आपन को आंसर ता लिखिबार अछि ओके सो क्वेश्चंस को असंतु 25 टा क्वेश्चन अछि स्ट्रक्चर कौन हबो मो आपन को क्वेश्चंस रो ओके फर्स्ट हमें टिके पढिबा तापरे डिस्कस करिबा कोन आरो आंसर हे पर ओके सो come to the first question 1 आपन को स्क्रीन रे जोटा अछि which of the following अच्छा आकु स्टार्ट करिबा आगुरु जो माने टिके एते श्योर नांती रिलेटेड टू द प्रोविजंस हला काई ना एठी डायरेक्टली केते जगह रे सीधा सेक्शन को रेफर करूची तेनु बेयर एक्ट पाखरे रखि दांतो ओके आरो बेस्ट मेथड हला पॉज कर देबे स्क्रीन टाकू काना ऑप्शंस वाला मु कहबिनी काना सेटा बहुत टाइम लागियो ताले मु क्वेश्चन टा कहबी तपर आंसर टा कहबी बेस्ट मेथड हला क्वेश्चन जतो मु कहूची किबा आपन को मोर जब मु कहूची सेटा इंपोर्टेंट नो आपन जस्ट पॉज करिकि निजे आंसर टा दे परिबे ठीक अछि क्वेश्चन ऑलरेडी आपन को क्वेश्चन पेपर फोल्डर रे अपलोड हो गई जो माने YouTube रो देखु जंती बेसिकली तो यू कैन जस्ट पॉज एंड यू कैन चेक ठीक है क्वेश्चन 1 which of the following correctly reflects the principle under section 21 regarding admissions in civil cases okay section 21 कथा कहूची अच्छा एमती भी पढ़िबे पारिबे आपण कि आपण बेसिकली 21 टा फर्स्ट पढ़ि दियंतु ओके रीड 21 फर्स्ट ठीक है 21 टा फर्स्ट पढ़ी दियंतु तापरे अपन निजे आंसर तो जानि परिबे ओके सो कोन हबो 21
टू 30 जो फर्स्ट क्वेश्चन टा तार which of the following correctly reflects the principle under section 21 regarding admissions in civil case? So A hobar admission. Answer: admissions are irrelevant if made under express condition excluding their proof. Okay, civil cases रे exclusively जब लिखा है कि नहीं था admission हिसाब रे use करी होबनी एटा गोटे proof हिसाब रे evidence हिसाब रे use करी होबनी तो सेटा admit होबो. Okay, तापरे second question टा देखंतु which statement best explains the second provision to section 22 regarding confession. Okay, जदि मने नहीं टिके 10 seconds नियंतु pause कर दियंतु वीडियो पढ़ंतु प्रथमे सेकंड प्रोविजन टा. ओके, सेक्शन 22 रो सेकंड प्रोविजन टा पढ़ंतु आगे. ओके, देन ट्राई टू गिव द आंसर. पॉज द वीडियो एंड देन चेक एंड गिव द आंसर. ओके, so question 2 ro answer will be B. Confession does not become irrelevant merely due to absence of warning. Okay, तापरे question 3 की आसंतु under section 23 which of the following is correct regarding confession to police? Okay, pause करंतु टिके पढ़ंतु तार options गुड़ा. Okay, again जदि आपण you are not clear with 23 first 23 टा पढ़ी दियंतु डायरेक्ट वीडियो पॉज करी. Done? पढ़ सरले ताले कौन होबो आंसर according to you? So question 3 ro C will be the answer. Confession to police is completely barred against accused. Okay, question 4 को आसंतु which statement correctly describes the exception under section 23 regarding discovery? Okay, again if you are not thorough with the section please go through it. Okay, डायरेक्टर देखी दियंतु on our answer. So for this question your answer is A. Only that portion of information leading to discovery is admissible. Then question 5 question to A and B are jointly tried. A confesses that both committed the offense. B denies involvement. What is the evidentiary value of A's confession against B? Okay, so eta directly illustration ru asichi. So what will be the answer? So 5 ro D will be the answer. It may be taken into consideration against B. Okay, question 6 question to which condition is essential for applying section 24 regarding confession of co-accused? Okay, section 24 apply करिया पाई essential condition कौन रहेगा? So question 6 B will be the answer. Accused persons must be jointly tried. Okay, next question 7 question to which of the following best explains the effect of admission under section 25? Again, if you don't know what is section 25, go through it in the barrack. So question 7, which of the following best explains the effect of admission under section 25? That is A will be the answer. Admissions are not conclusive but may operate as estoppel. Okay, next question 8 question to
Which of the following is correct regarding inducement under section 22? Already 22 ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, so C will be the answer. Inducement must be from person in authority and related to charge. Okay. Now question 9. A in police custody gives information leading to recovery of weapons used in crime. The statement includes confession and description of location. What is admissible? आ भितरु से जब भी कहला कौन admissible हबो. That is question 9. So only portions related to discovery of weapon. Okay, so B will be the correct answer. Now come to question 10. Which statement correctly reflects the scope of section 21? Explanation regarding advocates. Okay, तो explanation जोटा section 21 रो सेटा टिके पढ़िबे जदि मन नै तो टिके देखंतु because it is related to advocates. Okay, section 21. Yes, so what will be the answer then? B will be the answer. Advocates may be compelled to give evidence under specified provisions. Okay. Next, question 11 को आसंतु. Which of the following statements is most accurate regarding clause A of section 26 of BSA? Okay, तो clause A टा ये पढ़ंतु, 26 टा पूरा पढ़ंतु, specifically giving emphasis on clause A. Yes, so what will be the answer then? जदि आपन को आउट के टाइम दरकार होची आपण पॉज करंतु. Okay, you can pause the video. So what will be the answer for question 11? A टा correct. A statement as to cause of death is relevant even if it was not made under expectation of death, provided the cause of person's death comes into question. Okay. Next. अच्छा गोटे जिन मन रखिए जो स्पेशल जो मैंने आगुरी देखते से तो जानते नुआ जो मैंने अच्छा ओके इनिशियली से मैंने प्रिपेयर कर MCQ क्वेश्चंस किंबा प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में था तार गोटे बेसिक जिनस है कि जदि मोर देन वन ऑप्शंस आपन को ठीक लगुच ओके गोटे रो अधिक ऑप्शन आपन को ठीक लगुच ताले से जगह रे आपन को जोटा सबटू अधिक आपन को ठीक लगुच सेटा को मार्क करिवार अछि. केबे केबे एमती होबो कि किछिटा एमिति क्वेश्चंस भी थिबो जोतरा आपन लगुच ना एटा भी ठीक अछि सीटा भी ठीक अछि अधिक ठीक कोटा लगुच. ओके तो सेटा को मार्क करा हबो. बुझि पाले. So now let us come back to our question. Under section 26B, which of the following is the best reason why an entry made by a deceased person in the ordinary course of business is treated as relevant? Okay, options जो टिके लंबा अछि, so pause करिकी टिके आगे देखंतु question number 12. So option C will be the correct answer because regularity in the course of business supplies a guarantee of reliability sufficient for relevance. Okay, question 13 को आसंतु. Which of the following best captures? Okay, आ भितरु अलगा भी ठीक है पर किंतु best कोटा best captures the clause C of section 26. Question number 13. Okay, RB pause करंतु, you read each and every options.
So B will be the correct answer here. A statement is relevant if it was against the pecuniary or proprietary interest of the maker, or if true would expose him to criminal prosecution or damages. Question 14 को सुन दो. A dispute arises in 2026 whether a village pathway is a public way. The plaintiff relies on a 2024 statement made by the now deceased village headman that the road was public. At the time of the statement, no dispute regarding the pathway had arisen. Which is the correct position? Okay. Options देखो. Question 14. So D will be the correct answer. The statement is relevant under 26D since it concerns a public right and was made before the controversy arose. Okay, so D will be the correct answer. Question 15 question do. Which of the following conditions is necessary for relevancy under section 26E concerning relationship by blood, marriage or adoption? Okay, so pause करके ठीक है डिटेल्स से पढ़ो ऑप्शंस गुड़ा. So C will be the answer for question 15. The person making the statement must have special means of knowledge and the statement must have been made before the dispute was raised. Question 16 question do. Section 26F is best understood as applying to which of the following? 26F again जदि अपना मन नहीं कि डाउट अच्छी प्रथम पढ़ी दियंतु वेराइटू तापर आंसर करंतु. एथरे कोन अपना कांसेप्ट टा बिल्ड हबो. ठीक अछि. बहुत जन एंती करंती किसी क्वेश्चन पढ़िबे तार आंसर देखिबे सेमती लाभ हबनी. बेस्ट वे केमती एमसीक्यूज को पढ़िबार थाए ना आपण डायरेक्टली देखिले पर्टिकुलर प्रोविजन देन you see all the options. काहे ना सेम क्वेश्चन टाको ऑप्शन बुले की भी पका ही पारिबो. ठीक है बहुत परीक्षा रे सेमती भी पड़े. So question 16 just go through it. So what will be the answer for question 16? A. Statements regarding relationship between deceased persons made in a family will, deed, pedigree, tombstone, family portrait or similar things provided they were made before the dispute was raised. Now come to question 17. Which of the following correctly states the cumulative conditions for using evidence from a previous judicial proceedings under section 27? Okay, please go through the options. Question 17. So कौन होगा आंसर? So B will be the correct answer. The former proceeding must be between the same parties or the representatives in interest. The adverse party must have the right and opportunity to cross-examine, and the question in issue must be substantially the same. Question 18 का सुन दो. In a civil suit between X and Y, a witness had earlier testified in a criminal case arising out of the same transaction between the state and Z. The witness later dies. X seeks to rely on that earlier testimony against Y under section 27. Which option is correct? Question 18. Just go through the options. So what will be the correct answer? A options with through. Okay. The testimony is not admissible under 27 because the earlier proceeding was not between the same parties or their representatives in interest whereas X and Y. Next, question 19 question 2. Which of the following is the correct legal effect of entries in books of account under section 28?
So options देखो what will be the answer? C correct. Such entries are relevant if regularly kept in course of business, but they alone are insufficient to charge any person with liability. Question 20 question. Which of the following most accurately distinguishes section 26B from section 28? Options देखो question 20 पे तो कौन सा आंसर हम आपनकर for question 20? A is correct. Section 26B concerns statements of unavailable persons made in ordinary course of business, whereas section 28 concerns entries in books of account regularly kept in course of business, but such entries cannot charge liability. Okay. 21 question. So which of the following entries falls squarely within section 29? Question number 21. Just go through the options. So B will be the answer. An entry in an official birth register made by a competent public servant in discharge of official duty. Okay. 29 under the SHU. 22 question. A sues B on alleged loan. A produces his electronically maintained ledger. Okay, electronically maintained ledger regularly kept in business, showing B as debtor for 5 lakhs. No receipt, witness, acknowledgement, bank trail or other evidence is produced. What is the correct result? Question 22. Options गुलो देखो. So D will be the answer. 22. The ledger entry is relevant but by itself insufficient to charge B with any liability. Question 23 की सुन. Which of the following best states the scope of section 30 regarding maps and charts? Go through the options for question 23. कौन होगा आंसर 23 पे? So C will be the correct answer. Statements of fact in issue or relevant facts in published maps or charts generally offered for public sale or in maps or plans made under governmental authority are relevant as to matters usually represented therein. Question 24. In a boundary dispute, one party relies on a district map published for public sale and another relies on a private hand-drawn neighborhood sketch prepared for the suit. As to section 30, which statement is correct? 24 options देखो तो. So A will be the correct answer for 24. The published district map may be relevant under section 30 while the private land drawn sketch does not qualify merely by being a map. Last question, prelims by. Question 25. Which of the following propositions is most accurate regarding section 26 to 30 taken together? Okay, section 26 to 30, which proposition is most accurate? Question 25. So B will be the correct answer. These sections create specific exceptions or relaxations to the rule against hearsay or ordinary proof, but relevance under them does not automatically make the material conclusive. Okay. So these are the MCQs. Okay. एबे हमें आंसर लिखिबा
सेक्शन 21 टू 30 भितर जहाँ हमर रिटन पार्ट अच्छी ओके तार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दीटा फर्स्ट टिके डिस्कस करिवे तापर अपन लिखिवे ओके सो लेट अस स्टार्ट देन आर पैटर्न टा एंती रहइबो कि यू हैव टू राइट विद इन अ फिक्स टाइम ठीक है आमे जहाँ जहाँ क्वेश्चंस गुरा डिस्कस करिबा एगुरा 15 मार्क रो क्वेश्चन धरिकी चलिबा तमाने 15 अधा घंटा आपनकर टाइम रहइबो ओके जोटा आमे केबे केबे लाइव टाइमर रे करिबा ओके आउ केबे केबे मु कहि देबी आपनको कोन कोन एथर लिखिबार अछि आ आपण मॉडल आंसर को भी रेफर करि परिबे ठीक है मॉडल आंसर मन रखिबे मॉडल आंसर ता काई की दिया अछि जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन यू कैन नॉट राइट लाइक द मॉडल आंसर अब अगर मो आंसर ता मॉडल आंसर बोले हबो सेटा बहुत ही डिफिकल्ट अपन देखंतु मॉडल आंसर रे केते थ्योरी से रेफर करूची केते इंपोर्टेंट 5-6टा केस लॉस दोची ता डिटेल सहित ठीक है डायग्राम दोची एटा पॉसिबल नहीं कि जने ताको निजे कर ठीक है फॉर एग्जांपल मु आपन को मॉडल आंसर ता हमर देखौची आजी रो जो हम डिस्कस करूछु ओके तो से क्वेश्चन रा करे तापर मु जस्ट मॉडल आंसर ता आपन को देखेबी कि यू नो दैट इज बेसिकली फॉर यू टू अंडरस्टैंड देखो हमर दी प्रकार मॉडल आंसर होची गोटे एतरे मेंस स्टार्ट हुए कि प्रीलिम्स सरे हमर गोटे मेंस रो क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुए सेतरे को पिले जॉइन करंती जे कि हम प्रीलिम्स निश्चित पाइबी तांकर जो आंसर टा लेखा हुए कि जो मॉडल आंसर टा दिया हुए सेतरे सेटा एमती लेखा था कि जोटा कि 15 मिनट रे सरीबो ठीक है 2 पेजेस पे लिखा था किंतु डेली आंसर राइटिंग बैच रो जो आंसर टा तार मेन दिन से हला आपन को आपन नॉलेज बेस टा को स्ट्रांग करबा सेथिପାଇଁ सेथरे पूरा डिटेल्स सब दिया हिथिबो आपन काम होला प्रथम ताको थरे पढिबे तापर चेष्टा करिवे ताको 15 मिनिट रे लिखिया पे जहा दरकार ओके दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ए भाबियनी कि सेथरे जा लिखा कि मते एग्जैक्टली से लिखिया पड़िबो सेटा सेति समय भितर संभव पर रहimo okay so let us first see the questions then I will just show you the model answer you try to write it okay आ जो माने जॉइन करिसंती आपण लिखि के सेटा ओके वंस यू आर सैटिस्फाइड कि ठीक रे लिख परली ताले यू कैन मॉडल आंसर तो दिया होची बट स्टिल देन आपण देखो इवैल्यूएशन पे पठे परिबे इवैल्यूएशन रे दीटा जिंस मेंशन करिवे ना निजर व्हाट्सएप नंबर आ गोटे ईच क्वेश्चन साइड रे लिखिवे कितने मिनिट नेले ताको लिखिया पे सेटा मते देखिया बहुत दरकार है ना से क्वेश्चन किछ डिफिकल्ट नो डायरेक्ट क्वेश्चन ओ जे सेवन जो आसे किंतु कदर वाला मु 30 मिनिट नहीं ताको लिखि छी मते परीक्षा तक भी 30 मिनिट मिलबन ओके सो से जिंसटा माइंड रे रखि थिबे ओके इनिशियली ठीक अछि प्रथम थर पे आंसर लिखु छी तो मासे टिके एक्स्ट्रा टाइम नहीं कि लिखु छी चलिबो किंतु आस्ते आस्ते यू हैव टू कम टू द एग्जाम पैटर्न तेनो आंसर साइड रे लिखिबे 15 मिनिट्स टेकन 22 मिनिट्स टेकन ठीक अछि प्रथम टिके अधिक हबो बट आफ्टर 2 मंथ्स 2 मास लिखला परे सेति तो अछि होता कि जेतिकी टाइम भितर सरिया कथा प्रोसीजरल लॉ रो हमें डिस्कस करू छी बीएसए टा तो 150 मार्क 150 मिनिट ठीक अछि त माने 1 मार्क 1 मिनिट 15 मार्क क्वेश्चन 15 मिनिट रे सरिबार अछि जो माने एक्सपीरियंस रछन आगुर जान चंदी लिखि जनी मेंस करिके आपण 15 मिनिट रे सरिबे सेटा है एक्चुअल जिंस कि आपण जेतिकी दरकार सेतिकी लिख परछन कि नहीं ओके फर्स्ट लेट अस गो टू द क्वेश्चंस क्वेश्चन ना फर्स्ट देखि जाओ तापरे हमें मॉडल आंसर रे टिके जस्ट बेसिक्स में देखिए ओके देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग आज हमें मु अपन जस्ट कॉल देउची क्वेश्चन टा किंतु बहुत गुडे क्लासेस रे हमें लाइव राइटिंग करिवो मु अपन 15 मिनिट जेबी गोटे क्वेश्चन पे टिके डिस्कस कर दो तापर अपन 15 मिनिट लिखिबे क्वेश्चन 1 को आसंतो क्रिटिकली एग्जामिन है दैट डायरेक्टिव कीवर्ड कोन क्रिटिकली एग्जामिन तो स्कोप एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीएसए फर्स्ट कौन कहले स्कोप आउ एडमिसिबिलिटी तो जो सब हेडिंग देबे सेथे या लिखा हितबो स्कोप आउ एडमिसिबिलिटी ओके बोला डिस्कस द रोल ऑफ इंड्यूसमेंट थ्रेट कोर्शन और प्रॉमिस तेनो फ्री विल वॉलंटरीनेस तार टेस्ट करिका कोन से गोटा टिके लिखिबे इन डिटरमाइनिंग वॉलंटरीनेस ऑफ कन्फेशन बोला सेकंड पार्ट तो चला फर्दर एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोविजंस and explain whether
Subsequent removal of inducement can cure the initial illegality with help of judicial principles. Judicial principles भी ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି. Okay, so ଆଉ ସେ ତ କହିବନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେସ୍ ଲସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ. lot of case laws are there. Okay, ଯେମିତି କି ଆପଣ ରାଜାରାମ କେସ୍ ଟା ଦେଇପାରିବେ. Okay, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କେସ୍ ଟା ଦେଇପାରିବେ. others are also there, right? So inducement, threat, coercion, ठीक ଅଛି, ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାର ଅଛି. PL ଦାନୀ କେସ୍ ନନ୍ଦିନୀ ସତ୍ୟଦେବ versus PL ଦାନୀ ସେଇଟା ବି ଦେଇହବ. lot of cases are there. ଆମେ ତ 10ଟା କେସ୍ ଲେଖିପାରିବା, 2-3ଟା important ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି. Okay, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ पर्सन इन अथॉरिटी स्कोप ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କି पर्सन ଟା अथॉरिटी ରେ ଥିବା ଦରକାର. କୋଉ କୋଉ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କି पर्सन इन अथॉरिटी କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ठीक है, तो स्कोप वरिका सेमती आपको लिखिबार अछि. ओके, रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट सेतरे केमिति हाउ द कोर्ट विल डिसाइड दैट द इंड्यूसमेंट और द थ्रेट हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड. ठीक अछि. सो तार जो टेस्ट करिका अछि सेगुडा आपन एमति कि नवजोत संधू केस रे लॉट ऑफ केसेस आर देयर. ठीक अछि, सेगुडा टिके देखि लिखिबार अछि. कथा 15 मिनिट रे सारिबार अछि. ମୁଁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦବା ପାଇଁ 15 ମାର୍କ ଏଣ୍ଡ ଅବଭ ମାର୍କସ ରେ. ଓକେ, 15 ମାର୍କ କମ ହେଲେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15 ମାର୍କ ଗୋଟେ ବେସିକ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ. ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ପ ବି କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ରେ. ଠିକ ଅଛି, ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କେମିତି ରହିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଶୋ ୟୁ. এইটা তার মডেল আনসারটা, যেমতি কি প্রিলিমস ପାଇଁ পুরা 10টা 15টা পয়েন্ট সে এক্সপ্লেন করଥିବେ. এগুলা নিশ্চিন্ত পড়িবে. এই এক্সপ্লেনেশন ରୁ ଆଉ 5টা क्वेश्चन ଆସି ଯାଇ ପାରିବ. ঠিক আছে, এক্সপ্লেনেশন প্রপারলি ଆପଣ ପଢିବାର ଅଛି. এইটা ହେଲା ତାର ମଡେଲ ଆନସାରଟା. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡେଲି ଆନସାର ରାଇଟିଂ ମେଣ୍ଟରशिप ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏମ୍ ଟା କଣ ନା ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ. ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରୁ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ କଭର କରିକି ଦଉଛି. ଏଇଟା କଣ ଲେଖି ହବ 15 ମିନିଟରେ? ओके, गोटे A4 पेपर अपन लिखिबे यदि 6 मिनिट जनरली आपनकर समय जदि ଟିକେ स्लो राइटर और ଟିକେ अधिक 6 मिनिट लागिबो सारिया पे. 15 मिनिट रे अपन 2.5 3 पेजेस लिखिबे. एटा प्रिंटेड फॉर्म रे होते 7-8 पेज अछि, बट सब पॉइंट्स कवर करछि. एते गुडे केस ल दैछि, हम देखने गोटे जेटा लिखिबा. ठीक अछि, ए डायग्राम टा इंपोर्टेंट. ए डायग्राम टा एनालाइज करिवे. डायग्राम इज वेरी इंपोर्टेंट. ठीक अछि, केबे कोन हबला हम सब पॉइंट लिख परिबेनी, तो डायग्राम लिख दे. ओके, ताले जानली कि हां डायग्राम टा करदेले से जानि जंदी. तापरे क्वेश्चन 2 को आसबो. Elaborately discuss the evidentiary value and scope of statements made by persons who cannot be called for witness, called as witness under section 26 of BSA. In particular, analyze the concept of dying declaration and distinguish it from other categories of statements under the section, highlighting the conditions of admissibility and limitations in judicial evaluation. So first step समझो कौन करिए, तो क्वेश्चन मिलना, underline the directive keyword, elaborately discuss. Okay, कौन से कहूँ तापर evidentiary value and scope of statement made by persons who cannot be called as witness. ठीक है, तापर तो evidentiary value सेटा अपन केस लॉस करके देबे. In particular exactly कौन करवार अछि, analyze the concept of dying declaration, distinguish it from other categories of statements. Dying declaration ଆଉ ଅଲଗା statements କର distinction ଟା ଦେବେ. Okay, highlighting the conditions of admissibility and limitations in judicial evaluation. ठीक अछि, तो तार स्ट्रक्चर टा ऑफ द आंसर अपन देखि परिबे. ओके, जितने एस्पेक्ट्स अपन कवर कर परिबे. एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन जहां जहां से पचारची सेही गुडा एही टाइप रो सब हेडिंग हबो, ताहले ही मार्क आसीबो. सी पचारची कोन मु लिखिबी कोन, ताले मार्क कोड आसीबो. से कहबो जुडिशियल प्रिंसिपल्स को लेके अपन को लिखिबार अछि, तो जुडिशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम केस लॉज. तो एही केस लॉ रे ओके कोन जुडिशियल प्रिंसिपल टा एस्टैब्लिश होला. ठीक अछि, लिमिटेशंस इन इवैल्यूएशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन.
ओके distinction from other clauses under section 26 जो से कहूला illustration और दरकार नहीं आप बुझिया भी ओके and the diagram that is important right so that you have to keep in mind है ना 15 मिनिट भीतर जो मैंने एक्सपीरियंस होचंदी आगुर लेखा लिख करचंदी 15 मिनिट भीतर तको चेष्टा करिवे सारिया पे जो मैंने नुआ अछंदी मॉडल आंसर देखि दियंतु प्रथमे बुझी जांतु तापरे ताको लिखिया पे चेष्टा करंतु काहे कि आपन तो केबे थरे लिखि नांदी जदी डायरेक्टली आपन कहबे ना मो एग्जाम पैटर्न में लिखिबे टिके टाइम लागिवो ओके गिव योरसेल्फ सम टाइम किछि समय दियंतु निजको ताले सेटा आस्ते आस्ते आपन लिखि परिबे लिखिबाटा इंपोर्टेंट दैट इज मोर इंपोर्टेंट ओके आउ गोटे जिनस भी कहबे मेंटरशिप बैच रे एटा तो जो हम डिस्कस करूची जेंति के सीआरपीसी चलची सेतरे कोन होची तो दिन को 6टा क्वेश्चन दिया होची ओके तो एटा रहला आपनकर बीएसए हमें एबे बीएसए गोटे दिन बीएमएस गोटे दिन तो आज बीएसए रो 21 टू 30 कलु काली बीएमएस रो 21 टू 30 हबो सेत पई आपण प्रिपेयर्ड होके रहबे ठीक अछि एगुडा आपनकर राती 8टा रे ओके आपनकर आजबो काली मोस्टली आपनकर लाइव राइटिंग भी रहबो बीएमएस 21 टू 30 दीटा क्वेश्चन हम लाइव राइटिंग करबा ठीक अछि आउ जदि आपनकर एमसीक्यू क्वेश्चन सुडा सेटा आपण पॉज करिकि भी ताकू आंसर ताकू करि परिबे राइट सो निजो स्ट्रेटजी हिसाब रे केमति मैक्सिमम आपण यूटिलाइजेशन करिवे सेटा आपण को देखिबार अछि तो काली पई सेम टाइम माने एटा हमर टाइमिंग ता रहउछि 8टा 8 पीएम राति 8टा तो आपण काम करछन्ती वर्किंग प्रोफेशनल भी होछन्ती आसी कि भी आपण ताकू देखि परिबे जो भी टाइम रे आपण देख परिबे प्लस गोटे दिन से हला तार जो टाइमर सहित हम लिखिबा ओके सेटा नेक्स्ट क्लास रो हम टाइमर सहित ताकू लिखिबा सो दैट जो पॉइंट्स रो आपण प्रिपेयर्ड कि अछन्ती सेटा आपण प्रिपेयर्ड कि रहबे आ मॉडल आंसर भी आपण पाखर अछि लिखिबो केमति ताकू 15 मिनिट रे सेटा को देखिया पड़िबो ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रॉपर्ली प्रिपेयर करंतु बहुत जो टिके प्रिपरेशन रे स्लैक हे जेंति काई कि ना हमर बाहरी में पर्यंत जेतबेले बाहरीबो एपीपी हो कि ओजेएस हो बहुत जल्दी जल्दी से माने एग्जाम्स कर देबे ओके सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू नमस्कार।